Welcome students to lecture number 1, part 4. So now that you have gotten a pretty thorough introduction to internet networking and the various devices that populate an internet network, it's time to head into exploring the internet networking models. The OSI reference model breaks this approach into layers. Uh, ISO, OSI, and soon you will hear about iOS. Just remember that the ISO created the OSI and that Cisco created the Internet Working Operating System iOS. Let's first talk about the history of internet working models. When networks first came into being, computers could typically communicate only with computers from the same manufacturers. For example, companies ran either a complete BCNet solution or an IBM solution, never both together. While in the late 1970s, the Open System Interconnection OSI reference model was created by the International Organization for Standardization ISO to break through this barrier. The OSI model was meant to help vendors create interoperable network devices and software in the form of protocols so that different vendors' networks could work in peaceful accord with each other. Anyway, the OSI model is the primary architectural model for networks. It describes how data and network information are communicated from an application on one computer through the network media to an application to another on another computer. The OSI reference model breaks this approach into layers. A reference model is a conceptual blueprint of how communication should take place. So we are discussing the layered approach. Why is it feasible to have a layered approach? It addresses all the processes required for effective communication and divides them into logical groupings called layers. When our communication system is designed in this manner, it's known as a hierarchical layered architecture. तो लेयर्ड आर्किटेक्चर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, काफ़ी फ़ायदे इसके होते हैं. इसमें लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हम एक कंपनी सेट करना चाहते हैं. तो कंपनी सेट करने के लिए आप प्लान्स करते हो, ठीक है, होमवर्क करते हो, मुख्तलिफ टीम्स को आप इकट्ठा करते हो, आइडियाज़ लेते हो, ठीक है, डिस्कशन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है, टाइम लिमिट डिफ़ाइन किया जाता है, कॉन्स्टेंट्स लगाई जाती है, वर्किंग को डिफ़ाइन किया जाता है, फिर आपस में शेयरबिलिटी की बात होती है कि किसका वर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसकी आउटपुट जो है वो किसकी इनपुट बनेगी, डिपेंडेबिलिटी की बात की जाती है और डोमेन्स को डिफ़ाइन किया जाता है. तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है लेयर्ड अप्रोच को रिप्रेजेंट करती है. तो लेयर्ड अप्रोच बेहतरीन होती है. तो नेटवर्क जो रेफरेंस मॉडल्स है, जो सबसे बेहतरीन या जो मेजर है वो OSI मॉडल है, वो एक लेयर्ड अप्रोच. रेफरेंस मॉडल्स के फ़ायदे क्या हो सकते हैं? Why we should have a reference model? The OSI model is hierarchical, as you know, and there are many advantages that can be applied to any layered model. But as I said, the OSI model's primary purpose is to allow different vendors' network to interoperate. In addition to this, we have a list of some of the more important benefits of using the OSI layered models. Number first, it divides the network communication process into smaller and simpler components, facilitating component development, design, and troubleshooting. In addition to this, it allows multiple vendor development through the standardization of the network components.
It encourages industry standardization by clearly defining what functions occur at each layer of the model. It allows various types of network hardware and software to communicate. Finally, it prevents changes in one layer from affecting other layers to expedite development. तो ये तमाम जो थे ये हमारे पास डिफरेंट एडवांटेजेस है एक रेफरेंस मॉडल को यूज़ करने के लिए। जैसे हमने साथ में बात की कि दिस इज़ लाइक ब्लूप्रिंट, ठीक है, सारी चीज़ें जो होती है वो डिफाइन हुई होती है। हम लोग जनरलिटी में बात करते हैं, जनरल टर्म्स में बात करते हैं, स्पेसिफिक नहीं होते। जब भी इस रेफरेंस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जैसे TCP IP है, तो उसमें जनरल टर्म्स को स्पेसिफिक टर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो जनरल प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, वो तो सब चीज़ें सेम होती है। तो कोई भी वेंडर जो है उसको रीड करके अपनी प्रोडक्ट को बना सकता है, अनलेस एंड अनटिल कि वो उन रूल्स और प्रोटोकॉल्स के साथ कंफॉर्मिटी उसकी हो। So let's talk about the OSI reference model. Okay. OSI reference model provides a way for the data transfer between disparate hosts running different operating systems like Unix hosts, Windows machines, Macs, smartphones, and so on. It's a logical model. Remember it. It's a logical model, not a physical one. It is not present in implemented form. A set of guidelines that developers can use to create and implement applications to run on a network. It also provides a framework for creating and implementing network standards, devices, and networking schemes. The OSI has 7 different layers divided into 2 groups. अभी आप देखेंगे भी कि ये layers जो 7 layers है ये कौन कौन सी है, इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ऊपर की जो 3 layers हैं, ठीक है, उनका काम क्या होता है कि एंड स्टेशंस के साथ कैसे कम्युनिकेशन कैसे करनी है यूजर्स ने आपस में। जो नीचे के 4 लेयर्स है, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखना है, या इस चीज़ को कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एंड टू एंड डेटा को कैसे ट्रांसमिट करना। तो लेट्स हैव अ लुक एट द 7 layers. In order to memorize it, some people like to use a mnemonic to remember the 7 layers, such as all people, all A, people B, seem to need data processing. Okay, but you can also use the word APS, TNDP. आपने इसको याद रखना है तो 2 ये मुख्तलिफ तरीके हैं, आप इसको वो कर सकते हैं। और ये 7 लेयर्स है, ठीक है। टॉप लेयर जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, विच इज़ लेयर 7, कंसिडर्ड एज लेयर 7। प्रेजेंटेशन लेयर है, फिर सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है। अब ये तमाम जो लेयर्स है इनके अपने अपने वर्किंग है, फंक्शंस है, इन मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स इसके ऊपर काम करते हैं। और आगे जाके लेक्चर नंबर 2 में इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे कि इन लेयर्स पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनकी वर्किंग क्या है और क्या क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। ब्रीफली अभी मैं आपको बताऊंगा भी इनके लेयर्स पे जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म होते हैं, लेकिन डिटेल में हम लोग इसको लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। तो दीज आर द 7 लेयर्स ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। यहाँ तक हमारा पार्ट 4 था, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 का, जिसमें हमने लेयर्ड अप्रोच की बात की, रेफरेंस मॉडल्स की बात की, फ़ायदे उनके बताए। फिर हम आगे जाके हमने बताया कि OSI रेफरेंस मॉडल है, ठीक है, और लॉजिकल है, फिज़िकल नहीं है। तो अगले लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 4 में अभी हम बात करेंगे इसके लेयर्स के फंक्शंस की। थैंक यू।